वेलकम बैक नाजरीन। हम अपने मेहमानों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मिस्टर हाउजे फ्राम स्पेन एंड डॉक्टर रिजवान मलिक साहब जो अमेरिकन नेशनल फर्टिलिटी सेंटर को लीड कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारी कौम के लिए, हमारे नेशन के लिए एक सेहत के लिए एक हौसला अफ़ज़ा पैगाम पहुँचा रहे हैं। So we start from the same topic which we were discussing in the last session. That's from the genetic engineering or gene therapy. What does gene play a role in the development of embryology and something like that? What you were saying, please convey to our viewers. Sure. Well, the genetic part of an embryo is very important. We can have, for an example, we can have a very beautiful embryo, okay, if we are looking at by its morphology, but this beautiful embryo maybe inside could be or not could be completely well with the genes. Okay, the genes could be not so well, so that's why we need a new test for analyzing these embryos. Sometimes these embryos under the microscope we are not able to see which problem they can have. So for these purposes we have the genetic testing. Okay, nowadays this technique has evolved since a long time ago, because the new generation technique is the latest technique that we have. Okay, with this technique we can analyze two kinds of abnormalities. The one that are for monogenic diseases, and the other that for chromosome diseases. Okay, this technique is performed doing a biopsy to the embryos. Nowadays, this biopsy is performed on day 5. Years before, we done it in day 3. Okay, this technique on day 5 is a very interesting technique, and with a lot of you have to be very careful, and you have to have knowledge of the micromanipulation system, because you have to take like between 10 and 20 cells of the embryo to analyze them. So if we take in account that blastocyst has at least 500 cells, taking out 10 or 20 cells is very delicate. So we have to perform this technique with a lot of care. It looks that it's very precise practice, and we have to be very much careful. Yes. And does this gene activity tells us the way of or the direction towards the gender as well? Yes, as well. That's great. Yes. So that there may be a big acceptance for these techniques and for this sort of activity in the society. And दूसरा मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो जीन टेक्निक या जीन थेरेपी से जो जेनेटिक डिजीजेज हैं, जो जनरेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में समटाइम मुंतकिल होती हैं, तो उसके बारे में भी हम इसको कोई कंट्रोल कर सकते हैं? So genetic diseases are like like we said, a huge practice, kind of a very fine technique, very precise. उससे हम बायोप्सी लेके एम्ब्रियोज की यूनाइटेड स्टेट्स से फिर टेस्टिंग करते हैं. वी वेरी स्पेशलाइज्ड लैब जो उन सेल्स के अंदर जाके जेनेटिक एनालिसिस में बताती हैं भाई क्या ये बेटा है, बेटी है, जेनेटिकली नॉर्मल है एम्ब्रियोज, क्या है. इन एडिशन उसको पता चल जाता है कई BRCA2, हंटिंगटन डिजीज़, थैलासीमियाज, मुख्तलिफ जो इनहेरिटेड डिजीज़ आ रही हैं एक ख़ानदान में, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, उनका ये होता है कि हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करके आगे एम्ब्रियोज में चेक कर लेते हैं. तो उससे होता है कि आपके अगली नस्ल में फिर वो डिजीज़ नहीं आती. तो उसको एक आपके चलती आ रही है आपके ख़ानदान में, अगर एक बहुत एक जो है एक डिजीज़ जो crippling disease like bad thalassemias or neurodegenerative diseases, you can put a stop to that and really allow your next generation to stay healthy. So those I think very advanced techniques, and
kind of state of the art techniques are available at our center. और यही I think it's unique about our center कि हमारा जो है इस वक्त मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, पाकिस्तान में भी है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में. That's what makes us unique कि हम वहाँ जब जाके प्रैक्टिस करते हैं तो we are really integrated with all the colleagues and the different centers, the best techniques, to the most latest equipment. और फिर हम वो जब आते हैं पाकिस्तान, यहाँ पे हम हर दो महीने में 2 हफ्ते के लिए we are here in Pakistan, our team. जब हम आते हैं तो bringing all that knowledge, all that equipment, all the technique, all the best practices to you in Pakistan. So really you're getting as the world's best, whatever is being done in the world, the best, the most latest techniques you're getting right here in Islamabad. So that is huge, I believe. I think that was the vision when we created American Fertility Center about 7 years ago. We've seen a great growth and great thanks to our nation and Pakistan for accepting us and really allowing us to build this center of excellence in fertility and genetics. शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे तो बड़ी हौसला अफजाई हो रही है और आई थिंक कि मेरे नाजरीन भी इसको सुन के दे विल बी इनकरेज, एक उनमें इनकरेजमेंट होगी कि इस डिजीज़ को एड्रेस किया जा सकता है और हमारे पास इतने काबिल और आला स्किल के लोग अवेलेबल हैं और जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं. तो ये जो आपने बताया कि यू गेट द ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, स्पेशली इस तरह बात कि अमेरिका में भी हुई है, कनाडा भी हुई है और यहाँ पाकिस्तान में अब वही सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसके एक्सपेंडिचर्स के हवाले से कुछ लोगों के जहन में कुछ सवालात होंगे, उसको ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें. सर, इसमें एक्सपेंडिचर्स जस्ट लाइक यू सेड कि द सेम टेक्नोलॉजी, द सेम प्रोसेस दैट्स हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, वहाँ के निस्बत हमने पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया है. एंड रियलाइजिंग एक जो है कि वी आर इन अ डेवलपिंग नेशन, तो उसके मुताबिक जो फीस हैं, जो चार्जेस हैं, दे आर आल्सो वेरी competitive as far as local charges are concerned and are a very small fraction of जो बाकी यूरोप में या यूएस में चार्जेस होते हैं. सो चार्जेस इन पाकिस्तान, so that is the reason कि हमारे सेंटर में इस वक्त about 30% of our patients are coming from abroad. We get patients from Canada, patients from the United States, we have patients from UK, we have patients from Dubai, Malaysia, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Italy, France, and all of, so essentially about tons of countries. People are coming, not only Pakistanis, but local people, their local nations are coming. People, embassies are coming to our centers for their care. So local Pakistani embassies, we've taken a lot of pride in that we have established a center that is world class right here in Islamabad, providing the faith and trust to those people who could go anywhere. A person working in embassy could go back to their home country of France, do the same procedure, and they are choosing to stay here and do the procedure with us to have a baby. So that just brings me a lot of pride that I'm a Pakistani, I've brought this technology and I'm providing that care. And hopefully they'll go back to France and say, listen, my God, what a great kid I got. Look at this baby. This kid was made in Pakistan. So it's, we talk about made in Pakistan. We're making a lot of babies in Pakistan. That brings our center a lot of pride. शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी इस बात को मैं भी मोतरफ हूँ और गवाह हूँ कि पाकिस्तान की जो हेल्थ की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए अदर. लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ का सिस्टम है वो भी ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है कि 78% ऑफ द हेल्थ जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से हो रही है पाकिस्तान के लोगों की, और जबकि फ़ॉरेन में हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं, अदर सपोर्टिव्स हैं. तो आई थिंक आपने इसको ज़रूर मद्देनज़र रखा होगा. पाकिस्तान में कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं आपके? सर, पाकिस्तान में हमारे सेंटर्स इस्लामाबाद में है, लाहौर में हमारी प्रेजेंस है, मुल्तान में है और पेशावर और फैसलाबाद. सो इसमें हमारा एक ऐसा सेटअप है जिस नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स जो हमारे सेटअप्स हैं कि जिसमें आप लोकली रह के आपका बहुत अपनी सर्विसेज कर सकते हैं. लाइक टुडे जस्ट बिफोर कमिंग टू द शो, कपल आया लाहौर से, so they were asking me, hey, we cannot travel back and forth 5 hours, 6 hours, every time for an ultrasound, an appointment, or 10 times. So we realized that we can provide services to people
who are coming from very far. Karachi से बहुत हमारे patients आते हैं, not only international, right? So we talk about international patients. So हमने special program बनाए में local accommodation को provide की जाती है patients जो आते हैं दूर से, plus जो है उनको local monitoring की जाती है अपने शहर में हमारे centers में, यहाँ पे ताकि सिर्फ specialized procedures के लिए जो मुहैया किए जाते हैं इस्लामाबाद वो यहाँ पे आए. So we really have catered for the distance in Pakistan. Same thing we do in other United States and Europe, जहाँ पे हमारे centers हैं कि उसमें we provide initial care locally and then the patients only come to our center for final and specialized procedures or testing. थोड़ा सा हम फिर टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ आएंगे. ये जो फीमेल के प्रोसीजर्स या मेल के प्रोसीजर्स हैं वो ज़रा हमारे नाजरीन से शेयर करें. सर उसमें आई थिंक जो ख़वातीन हैं उनके मेनली एज फार एज इनफर्टिलिटी इज़ कंसर्न्ड PCOS बहुत कॉमन है, उसके लिए सेंटर है स्पेशलाइज्ड केयर और IVF और मुख्तलिफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है जिसमें हमारी ख़वातीन की ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और उनका आवाज़ नहीं होती, उसके लिए वी हैव सर्विसेज अवेलेबल. एंड बाकी जो है जो ख़वातीन के लिए फुल रेंज ऑफ सर्विसेज एज वेल एज फॉर मैन, राइट. मर्दों में जैसे हमने बताया कि 40% 40% मैन विल हैव लो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी, उसके लिए वी प्रोवाइड मेडिकल थेरेपी, वी प्रोवाइड फर्दर थेरेपी ताकि अगर उनकी काउंट्स बेहतर हो जाए, उनके मेल फैक्टर बेहतर हो जाए, नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है. वरना IUI होता है जिसमें जरासीम को साफ करके और हेल्थी मटीरियल हेल्थी जो है उसमें डाल के एनवायरनमेंट्स में यूट्रस में रखा जाता है टू ईज हैव एक्सेस टू द एग. और तीसरा प्रोसीजर जो टेस्ट ट्यूब IVF का है वो भी मेल फैक्टर की वजह से बहुत इफेक्टिव होता है. इसमें हुज़ूर ने कहा कि एक्सी की जाती है जिसमें आप स्पर्म को फ्रॉम जस्ट अ फ्यू स्पर्म्स राइट लेके हम उनको इंजेक्ट करते हैं के अंदर और उसको फिर आगे कल्चर करते हैं फॉर 5 days, इट बिकम्स एन एम्ब्रियो. उस एम्ब्रियो को यूट्रस में रखा जाता है ताकि एक प्रेगनेंसी हो सके. सो दीज आर वेरी एडवांस्ड टेक्निक्स, वेरी एडवांस्ड therapies available. Lekin I think the first thing is not to consider this as a disease or a stigma. It is something very normal, and so 15% of the couples who face this in their marriage, they get married, they think everything will be fine. A year, 6 months, if you're not getting pregnant, seek the care in a center of excellence. Don't go to the local physician. I admire our local docs; they're very good for what they do. Go there for your flu, for your cough, for your lung disease, heart disease, for your stroke, leg pain, other things. But when it comes to fertility, attend to a specialized fertility center they're focusing on this one problem, and American Fertility is leading the way in this field of infertility in Pakistan. We have multiple locations. I'm sure there's one that's close to you. Please access our website. और उसमें वहाँ पे आपको मिलेगा सारी इन्फॉर्मेशन और लोकल सेंटर की इन्फॉर्मेशन भी रेफर और वहाँ से आपका जर्नी शुरू होगा टुवर्ड्स बिकमिंग पेरेंट्स. डॉक्टर साहब एक और टॉपिक था जिस पे हम बात करना चाह रहे थे, वो था मिनिमल इन्वेसिव रोबोटिक सर्जरीज. उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमारे जो नाज़रीन थे उनको आगाह कीजिएगा. जी डॉक्टर साहब, उसमें वी हैव क्रिएटेड अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस for minimally invasive surgery in Pakistan. So the idea is that to create centers of excellence जहाँ पे आप एक specialized काम करते हैं, just like there is the liver center, the kidney center. So they are focusing on the kidney. That's all they do all day long. A liver center does liver center all day long. So center of excellence for minimally invasive surgery means that जो पुराने ज़माने में होता था कि इसको निकालने के लिए इतना बड़ा कट लगा दिया और बड़ा ऑपरेशन कर दिया, 6 दिन आप अस्पताल में रहे, उसके बाद 1 साल आप घर बैठे रहे दर्द से. Those times are gone. Those are It's like saying, okay, मैं अभी घोड़ा लेके चलूँगा सदर. That's what that is like. So today, अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, we have this pinhole surgery is called, or minimal invasive surgery, laparoscopic surgery, जिसमें इतना छोटा सा incision करके we can treat ovarian cysts, endometriosis, pelvic pain,
many surgical जो भी essentially female gynecological surgeries हैं, those can be managed. Women heal in an hour and they go home, enjoy their family in the evening. So it's really a day surgery. A lot of these problems can be fixed and handled with minimally invasive surgeries. So if you're faced with a GYN issue or problem or cyst, pain, endometriosis, reach out. In that, we have introduced advanced techniques in our center of excellence. पहले था minimally invasive surgeries, advanced hysteroscopies, septums, laparoscopies. हमने फिर देखा जब हम आए तो हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने कहा कि हमें औलाद का इशू नहीं है. We have beautiful kids, हमारे 3 बच्चे हैं, but you know I'm 40 years old और इस वक्त महामारी मेरी इतनी आती है कि I don't know what to do. I'm anemic, अस्पताल जाते हैं, ब्लड लगवाते हैं और there's no relief. उसमें अमूमन ये किया जाता है कि हिस्टेरेक्टमी कर दी जाती है. हिस्टेरेक्टमी इज़ अ मोरबल प्रोसीजर. उसके लिए इंसिजन करके ख़वातीन 6 हफ्ते घर में बैठी रहती हैं. उसके बाद भी उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. यही था अमेरिका में 20 साल पहले. हम यही करते थे. मैं जब ट्रेनिंग हुई थी तो a lot of these techniques were not available. So हम भी यही करते थे ट्रेनिंग में कि कोई आता है ऐसा प्रॉब्लम जिसको होता है खातून को जिसके ब्लीडिंग है तो हमने उसको हिस्टेरेक्टमी कर दी, ख़त्म हो गया, that was it. लेकिन 20 साल पहले जब ये टेक्निक्स आए, कंप्यूटर्स रेवोल्यूशन एंड टेक्निक रेवोल्यूशन आए, जदीद मेडिकल साइंस, उसमें एक टेक्निक आई एंडोमेट्रियल अब्लेशन की. एंडोमेट्रियल अब्लेशन ये होता है कि एक खातून है, उन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है और हैवी ब्लीडिंग है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, उनकी just with time with the family, and she's bleeding all the time, she's miserable, she's weak. तो वो बजाय hysterectomy करने के they're opting out. This is the new trend. This is what's happening in the United States. They don't go for hysterectomy. वो endometrial ablation करते हैं. अब्लेट करके पूरा उस जो जहाँ bleeding होती है उसको आप बर्न कर देते हैं. उससे उनकी माहवारी रुक जाती है. और कई खातून पूछते हैं कि माहवारी रुकने से ही is it not bad? You know, what if it accumulates, piles up in my body? Answer is, it's not piling up. We have just burnt that functional layer that was causing all the bleeding. Hormonal benefit is कि अब ovaries काम करती रहती हैं, so hormonally you're not it doesn't put you in menopause. The hormones keep working fine like you were doing before. The only thing happens कि bleeding आपकी रुक जाती है. So that's a huge benefit. United States most of the women actually opt out for this. When they're having bleeding, they say, fine, it's a simple 90-second procedure. It's done. Let's watch a small video. I think that will help us explain what the procedure is, help us visualize what it is, and then I'll describe the procedure to you and help you understand, if it's good for you. बेशक नाज़रीन, अब हम डॉक्टर साहब से वो वीडियो जो शेयर किया डॉक्टर साहब उसको देखते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ जाएंगे. 2-3 पॉइंट्स. सो प्लीज़ सी दिस वीडियो. तो ख़वातीन साथ जिस आपने वीडियो में देखा, इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर जिसमें हम जाते हैं इट इज़ अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट दैट जो जाता है यूट्रस के अंदर थ्रू द सर्विक्स. इसमें कोई इंसेशन नहीं है, कोई कट नहीं है. इट इज़ ऑल डन थ्रू द सर्विक्स. जहाँ पे हम जब इंस्ट्रूमेंट है इंट्रोड्यूस करते हैं टू द यूट्रस, आफ्टर इंट्रोड्यूस द यूट्रस वी उसको हम अरे है इसका कॉपर का अरे, उसको हम एक्सपैंड करते हैं. उसके बाद हम सेफ्टी चेक होता है कि एवरीथिंग इज सेफ एंड एवरीथिंग इज how it should be in terms of to perform the procedure. There is a safety algorithm that is run by our latest equipment that does the procedure with us. Now, after this, you will see that कि आपकी जो lining है uterus की वो burn हो जाती है within 90 seconds. उसके बाद से को remove किया जाता है, patient को recover करके anesthesia से घर चली जाती है. Within 30 minutes, the procedure is complete. They're home. Imagine that 30 minutes can change your life, quality of life for the next 20 years. I mean, it's amazing. This is technology. It's like a revolution. Just like computers have changed our world. Now we all have a cell phone in our hands. We're watching videos, all that. This was the revolution in gynecological surgery.
जिसकी वजह से जो है ख़वातीन का ब्लीडिंग का कंट्रोल हुआ है. Hysterectomies went in the United States from 600,000 to less than 200. All these people are getting ablation and not going for hysterectomy. Over 2 million procedures have been performed in the United States safely, and you know it's being done every day. Thousands of procedures are being done every day in the United States. So we have brought that technology to Pakistan. We are the only center to offer this technology and this latest जो है आप कह लें कि treatment modality to the women of Pakistan. We're committed to providing excellence in healthcare to the women in Pakistan. We feel a lot of pride and that we're introducing the latest technologies and are able to provide the best of the healthcare that has to offer in women's healthcare right here in Islamabad, Pakistan. डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई मुझे ये जान कर के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं या जो लेटेस्ट सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं और इससे ख़वातीन जो कि मोर देन 50% हमारी कम्युनिटी को प्रिवेल करती हैं उनके लिए ये बहुत सारी मुफीद चीज़ें आपने शेयर की. तो क्या इसका मतलब आप देखें जो भी टेक्नोलॉजी वो टॉप टू बॉटम स्प्रेड होती है, मतलब इट्स नॉट ओनली इन द इस्लामाबाद बल्कि मेरी वो ख़वातीन बहनें जो सिंध में हैं, जो रूरल एरियाज़ में हैं, जो पेरिफ्रीज में बैठी हैं, उनको भी इन सारी टेक्निक्स और उनकी ज़रूरत है. तो इसके लिए मुझे आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं. डॉक्टर साहब उसके लिए ये कि वी आर स्टार्टिंग आउट एज अ सीड. जैसा आपने फरमाया आप का एक मिशन है, एक विजन है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए. तो हमारी ये विजन थी. मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में एजुकेशन की अपनी जाके फ्रॉम हसनदार मैंने पढ़ाई की. उसके बाद हमें था शौक करें. सो वहाँ से मैंने पहले इंजीनियरिंग की, फिर मेडिकल स्कूल यूनाइटेड स्टेट्स से पढ़ा. उसके बाद ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की फॉर 25 years and I'm still practicing there. But मेरा एक पैशन था कि I should bring those technologies, I should bring these latest things to Pakistan as well. I should not just stay there for the rest of my career. So that's where I feel I'm introducing them. This is initial first phase. So we introduce it in Islamabad, we make it work. और उसके बाद we work with the Pakistani government, Government from Maya, to help provide it in all the other parts of the country, in Karachi, in Islamabad, in Peshawar, in our other clinics and centers. And so we will proliferate that, and we will kind of keep moving forward with our goal of providing the best healthcare to our country in the most efficient fashion and most effective. The best care that is available in the world will be given to our women in Pakistan. Thank you, Dr. Sahab. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं माशाल्लाह डॉक्टर रिजवान मलिक साहब हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, जो कि हमारी नेशन की हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बायस बन रहे हैं और न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स लेकर हमारी ख़वातीन की, हमारी माँओं बहनों और ख़वातीन की सेहत के लिए बेहतर से बेहतर टेक्निक्स ला रहे हैं. तो इसके साथ साथ ये ख़ासा हमने डिस्कशंस की और आपने ख़ासी मालूमात इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाई. मज़ीद फर्दर रिकग्निशन के लिए हमारी वेबसाइट, इस नेशनल अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर की वेबसाइट डिस्प्ले हो रही होगी. जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for giving us the opportunity to be here today. We're truly excited. Jose is our chief guest. We traveled for 4 days because of the airline changes that are happening. Jose traveled for 4 days from one airport to the other to be here with us. He's an asset, I believe. Yes, and we are investing into the assets because we want to provide quality care. We want to provide the best quality to every patient who puts their trust in us. And thank you for the opportunity to be here. And we hope that you'll get more education from our website. And if you have any questions, please do call us. We've got a great staff. They're there 24/7 to help you, to answer your questions, and to see how we can help improve your healthcare. Thank you so much. Thank you, Dr. Sal. Thank you. और इसके साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं हमारे स्टूडियो की तरफ से, हमारे तमाम मेहमान की तरफ से. अल्लाह हाफ़िज़.